मेरा नाम जी राव मसूद अली है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लाहौर से। और आपने ये कितनी देर फेडरेशन में आप ज्वाइन हुए थे? इस फेडरेशन के अंदर आपको कितनी देर हो गई है? मुझे फेडरेशन को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं। उससे पहले मैं टेबल टेनिस खुद खेलता था एज अ प्लेयर। अच्छा, ये जो टेबल टेनिस होता है इसके जरा हमको थोड़े रूल्स और रेगुलेशन इसके बताएं कि कैसे हम खेलते हैं। ये बेसिकली तो गेम स्टार्ट हुई थी चाइना से और इसके रूल्स ये हैं कि जब आप सर्विस करवाते हैं तो आपने पहला टिप अपनी टेबल पे देना होता है और दूसरा टिप ओपोनेंट की टेबल पे। लेकिन जब जो रिटर्न करता है उसकी लायबिलिटी होती है कि वो अदर कोर्ट में उसने बॉल रिटर्न करनी होती है। अगर वो राइट कोर्ट में बॉल ना रिटर्न कर सके तो वो फाउल कंसीडर होता है और ओपोनेंट का पॉइंट हो जाता है। प्ले टू सर्व भी होता है या वो वैसे ही किन रूल बनाए होते हैं? ये एक्चुअली इसमें है रूल के अंदर प्ले टू सर्व? नहीं, इसके लिए पहले टॉस करते हैं। टॉस में फिर डिसाइड करते हैं कि सर्विस कौन करवाएगा। सर्विस करवाने के बाद हर प्लेयर की एबिलिटी होती है कि वो 2 सर्विसेज करवाते हैं। 2 सर्विसेज के बाद फिर सर्विस चेंज हो जाती है। My name is Rao Masood Ali and I belong to Pakistan. I'm from Lahore. How long have you been involved with the Pakistan Table Tennis Federation? I have been with the Pakistan Table Tennis Federation for nearly 5 years now. I used to serve as a player as well myself. Can you tell us about some of the rules of table tennis, how you can play? This game started in China and the rules are that as the serving player, you need to tap the ball on your side of the table once and serve to your opponent, making sure the ball bounces over the net. If your opponent fails to return the serve without the ball bouncing in the opponent's half of the table, it is considered a foul and the opponent is awarded a point. Does the player who wins the point serve in table tennis? No, there is a coin toss before the match proceeds to determine who will serve, and each player has 2 serves before the service goes over to the opponent. आप पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन में कैसे शामिल हुए थे और कहाँ से आपका सफर शुरू हुआ था? असल में जी मैं बचपन से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ और खेलते हुए फिर मेरी छोटे जो लेवल पे टूर्नामेंट होते थे वो मैं खुद ऑर्गेनाइज करता था। तो मेरी इस खूबी को देखते हुए अभी 5 साल पहले फेडरेशन ने देखा मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी एज अंपायर, तो मैंने अच्छी तरह से निभाई। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है ना एज अ रेफरी एक टूर्नामेंट कंडक्ट करवाने के लिए दिया, तो वो मैंने बड़े अच्छे से करवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे नेशनल इवेंट्स मैं करवाता हूँ एज अ रेफरी और इंटरनेशनल इवेंट में भी मैं अंपायरिंग कर चुका हूँ। How did you enter your role in the Pakistan Table Tennis Federation and where did your journey begin? I have actually been playing table tennis since childhood, and as I was playing at the time, I used to arrange tournaments on this recognition of my potential ability. 5 years ago, the Federation awarded me the opportunity to officiate matches as a referee, and as an umpire they gave me an opportunity to conduct tournaments to umpire, and now I'm a match referee for all the table tennis events hosted in Pakistan. Also, I have had the privilege to referee on the international scene. पाकिस्तान में टेबल टेनिस की मकबूलियत क्या बढ़ रही है या कम हो रही है? पाकिस्तान में टेबल टेनिस ग्रेजुअली ग्रोथ कर रही है क्योंकि पहले तो ये लिमिटेड से होते थे, सोर्सेज नहीं होते थे। अब तकरीबन हर स्कूल कॉलेज में टेबल टेनिस के टेबल है और इसे मजीद एक्सपेंड करने के लिए हमने 2-3 इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हमने ना आउटडोर्स टेबल जो है ना वो बनाई है पार्क्स के अंदर। Is the popularity of table tennis on the rise in Pakistan,
or is the popularity in decline? In Pakistan, the popularity of table tennis is growing gradually, and as there were no resources before, there were no table tennis tables before in any schools or colleges in Pakistan. But now every school and college has a table tennis table. We have taken some initiatives to increase the growth of table tennis in Pakistan by arranging for some outdoor tables to be established where the public can try playing table tennis when the weather is nice and it's dry conditions outside. लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है बागे जिना, तो उसमें जो ना लोग पहले आके खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल और फ्रिस्बी वगैरह। तो हमने, क्योंकि टेबल टेनिस के लिए टेबल होना जरूरी है, तो उसके लिए हमने कंक्रीट और मार्बल की टेबल्स वहां लगाई एज ए एक्सपेरिमेंट के लोगों का क्या रुझान है। अब वो सुबह 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक अल्टरनेट टाइम पे लोग इतने वहाँ आ रहे होते हैं कि वो टेबलें कम पड़ गई हैं। तो हम इसे ऑल ओवर पाकिस्तान हम प्लान कर रहे हैं कि हम कंक्रीट की टेबल बनाएं ताकि लोगों को इसको एक्सेस हो और ज्यादा लोग इसमें आए। In Lahore, there's a large park called Jinnah Park. People used to visit there and they would use the park for football, cricket and for frisbee. For other purposes, now due to the essential requirements to play table tennis, you need a table. We laid down some concrete and some marble tables as an experiment to monitor the awareness of the game and how popular it would become. That became so popular with the community that there was more people visiting and there were not enough tables to accommodate all its visitors. We are now trying to build more table tennis tables so that the game becomes more accessible to the public. जब लोग टेबल टेनिस खेलते हैं कितने पॉइंट्स होते हैं और कितने सेट्स होते हैं मैक्सिमम? जी, इसमें जो सेट्स होते हैं वो ऑड सेट होते हैं, मतलब इसमें बेस्ट ऑफ 1, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 7 के मैचेस होते हैं। उसमें 10 पॉइंट्स की गेम होती है। जो प्लेयर फर्स्ट 11 कर लेता है वो जीत जाता है। अगर दोनों प्लेयर्स के पॉइंट 10 ईच हो जाए तो फिर सर्विस रूल बदल जाते हैं। दोनों प्लेयर्स की एक सर्विसेज होती हैं और जो प्लेयर 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट लेता है वो जीतेगा, वरना ये चलता रहता है टिल 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 50 पॉइंट, अनटिल अनलेस के एक प्लेयर 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ना ले ले, गेम चलती रहती है। ये ओलंपिक्स में भी गेम है और ओलंपिक्स में कैसे काफी बड़ी और ह्यूज होगी, और पाकिस्तान इस दफा क्वालिफाई हुआ है ओलंपिक्स के लिए? नहीं जी, इसमें हमारे एक वुमेन प्लेयर है परनिया जमान, उसको फेडरेशन की ताउन से, फेडरेशन की कोशिशों से IOC एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से ओलंपिक स्कॉलरशिप उसे मिला हुआ है। अभी उसके क्वालिफाइंग राउंड मई में है थाईलैंड में, तो हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का कोई ना कोई प्लेयर तो उसमें क्वालिफाई कर जाएगा। मैं खेलता हूँ ब्लाइंड स्पोर्ट्स और डिसेबिलिटी का भी ह्यूज फैक्टर आ रहा है पाकिस्तान में भी, जैसे आपने देखा क्रिकेट में और फुटबॉल में, डिफरेंट स्पोर्ट्स में। टेबल टेनिस में क्या अपडेट है पैरालंपिक्स की और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स टेबल टेनिस में? टेबल टेनिस में हमने पहले तो ये सेपरेट होती थी, अभी ITTF में मर्ज होने के बाद पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के पास भी इसका आया हुआ है। अभी रिसेंटली 5th इस्लामिक गेम्स हुई थी टर्की में लास्ट ईयर जो है, तो उसमें जो पाकिस्तान का एक व्हील चेयर बाउंड प्लेयर था पेशावर से, उसने उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो ग्रेजुअली अब हम इसको, जो पैरा के स्कूल्स हैं, पैरा के कॉलेजेस हैं, उसमें भी हमने टेबल टेनिस के रुझान बढ़ाने के लिए कुछ टेबल्स दिए हैं। लेकिन है कि उन प्लेयर्स के लिए इशू ये है कि उनके पास लिमिटेड एक्सेस है किसी क्लब में जाने के लिए। कुछ प्लेयर्स हैं हमारे कनाडा में भी हैं, एक इनकी अभी ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वो पाकिस्तान नेशनल था लेकिन अभी कनाडा में है, कनाडा से खेला था, उसने ब्रॉन्ज मेडल सिंगल में लिया था। How many points constitute
a game and how many sets are there. In this game, there are odd sets, so best of 1, best of 3, best of 5, and best of 7. A player needs to win 11 points to win each game. Each game, you need to win by 2 clear points. If it's tied at 10-all, when a game goes into tie-break, the game will continue until any player does not win 2 consecutive points. This game is in the Olympics. This would be a huge game if anyone qualifies for the Olympics. Has anyone ever qualified for the Olympics from Pakistan? Nobody has qualified for the Olympics yet from Pakistan. We are hoping to have someone represent Pakistan in Olympic competition called Bernia Zaman, who is a female player in table tennis. Bernia has earned an Olympic scholarship from the International Olympic Committee. We have hope that on this occasion there will be someone qualifying for the Olympics for Pakistan. There is a qualifying tournament in Thailand taking place in May, and we are hopeful to get someone who will qualify through the qualification tournament to represent Pakistan soon. What's the latest update with table tennis and Paralympics? Initially, table tennis was separate, but now since being merged with the International Table Tennis Federation, last year there was the 5th Islamic Games in Turkey. A player in a wheelchair from Peshawar has won the bronze medal. We have donated some tables to coordinate the game and raise awareness about table tennis. Also someone from Canada who has a Pakistan nationality but is a Canadian national. He has also won a bronze medal. However, they have found it difficult to access the sport in terms of getting into any clubs to practice due to limited access to the table tennis clubs. अगर आप यूके से कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहे तो इसकी क्या शराइत है और उसूल है? जी, उसका ये है, अगर तो वो पाकिस्तान नेशनलिटी है, यूके का भी है, तो अब जो आईटीटीएफ ने रूल बनाया है वो उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और साथ उसे एक एफिडेविट देना होगा, क्योंकि आईटीटीएफ का रूल है अगर वो पाकिस्तान नेशनल है तो पाकिस्तान से ही उसकी रजिस्ट्रेशन होती है उसके डेटाबेस में, और फेडरेशन के थ्रू फिर एक रजिस्ट्रेशन होती है। एक सॉफ्टवेयर है WTT का, वर्ल्ड टेबल टेनिस का। पूरे वर्ल्ड में हर टेबल टेनिस एसोसिएशन के पास उसका लिंक होता है और एक एक्सेस होती है, तो उसे चाहिए कि वो फेडरेशन को रीच करेगा और उसमें फिर वो कुछ हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फिल करेगा, तो फिर उसे हम अलाउ करेंगे कि वो इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। आपके किरदार में कौन कौन सी चीजें जरूरी आप समझते हैं और आप उसको बरकरार कैसे रखते हैं? उसके लिए तो ये है कि आपको एक डिटर्मिनेशन से आपको मतलब हर चीज की एक एक्सेस होती है, और उसके लिए जो है ना कैरेक्टर के लिए तो ये है कि आपको काम होना पड़ता है। आपको उसकी कुछ साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ होते हैं या उसके हम कुछ कोर्सेज करवाते हैं, ताकि ये कि वो जो प्लेयर है अपनी लिमिटेशन के अंदर है, और उसमें ये जो वाडा के रूल्स हैं उसके बारे में भी प्लेयर्स के लिए सेमिनार्स मुनक्किद करवाते हैं। हमारी जो नेशनल चैंपियनशिप होती है उसमें भी प्लेयर्स को इन रूल्स के बारे में हम आगाह करते हैं, ताकि जो है ना किसी तरह की भी जो है ना वो मिसबिहेव या जो गैर मुआशरती सरगर्मी है उससे बचा जा सके। What are the guidelines in Pakistan of representing if you are a foreigner from the UK, for example, wanting to represent Pakistan? You will need a Pakistan nationality. There is a software which the IWTT, the International World Table Tennis Federation, and every table tennis association has access to this link.
In Pakistan, they have created a rule where anyone representing from Pakistan has to be entered into that database through a software link, and they need to fill in some documents. Then we enroll the players into professional table tennis competition as an international player for Pakistan. What elements are important in terms of your role, and how do you maintain standard on a persistent basis every day? You need determination to access everything. We have appointed some psychologists who travel with us, who make sure that the players are aligned and they are coordinating and following all the rules, with whom we also do courses in order to equip them to handle different scenarios, and we educate our players. We also conduct seminars notifying them about the rules and the guidelines of table tennis, how to discipline them in order to avoid any types of misbehavior. ये जो गेम है आप ही खेली थी, आपने जैसा अपनी जर्नी बताई है, ये आप कैसे हैंडल करते थे अपनी फैमिली के साथ, और फिर आपने खेली, फिर आपने अंपायरिंग की, रेफरिंग की, जरा आप बताएं ये हर चीज को आप कैसे बैलेंस करते हैं? जी, स्टार्ट तो ये मैंने किया जब मैं ग्रेड 8 में पढ़ता था, तो उस वक्त हमारे घर से थोड़ी दूर स्टेडियम था, अराउंड अबाउट 3 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम माय हाउस। तो वहाँ हम खेलने जाते थे, तो वो कोच आते थे, स्टार्ट में वो जो है ना, देयर वर अराउंड अबाउट 30 प्लेयर्स, बट आई हैव अ डिटर्मिनेशन एंड आई वांट टू बिकम अ टेबल टेनिस प्लेयर। फिर उस कोच ने मुझे थोड़ा सा ज्यादा खिलाना शुरू किया, तो एक टूर्नामेंट आया कुछ अरसे के बाद, वो मैंने विन किया। फिर मैंने कॉलेज लेवल पे विन किया, फिर यूनिवर्सिटी में विन किया, और फिर जो है ना मैं नेशनल लेवल पे आ गया। How do you balance all this responsibility with your management of the Table Tennis Federation? I was studying in 8th grade. The stadium was not far from my house. It's around 3 kilometers from my house. We went to play at that arena. The coach used to turn up and there were 30 other players, and I had this determination to be a table tennis player. So my coach would give me more matches, and I played some tournaments which I won. Then I started winning at the college and university level, and I got to play table tennis at national level. फिर फैमिली का ये था कि स्टार्ट में तो सपोर्ट नहीं करते थे कि इससे स्टडी का आपका हर्ज होगा, आपको खेलने से जो है ना, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम देता था, अराउंड अबाउट 8 to 9 hours a day in the morning and including evening sessions. My parents are not happy with me to play this game for this long period, but I have a passion. जब मैंने ये कुछ टूर्नामेंट्स जीते, तो फिर पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे कुछ स्कॉलरशिप भी मिले यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो फिर जो है ना मुझे एक डिपार्टमेंट मिला पाकिस्तान रेलवेज, जिसकी तरफ से मैं अभी भी खेलता हूँ और एज ए कोच वहाँ काम कर रहा हूँ। इस तरह से जो है ना मुझे फिर वो थोड़ी सी सपोर्ट। और ये टेबल का साइज क्या होता है, और बैट और पिंग पोंग बॉल है, ये कितने होते हैं, और क्या साइज क्या होता है टेबल का? टेबल का साइज 9 फीट इसकी लेंथ होती है और 5 फीट विड्थ होती है, और इसकी जो स्टैंडर्ड थिकनेस होती है टेबल की वो 25 mm होती है। जो टेबल के ऊपर एक नेट लगा हुआ होता है वो 4.5 जो टेबल का सेंटर होता है उसमें लगा हुआ होता है, उसकी जो हाइट होती है टेबल की सर्विस से वो 6 इंच होती है। My family would not support me at first because I had to study as well, and I had committed too much time towards table tennis. But gradually I started playing in tournament games, and my family started supporting me, and I got a scholarship from the university as well. And his parents were not too pleased with him, as this will have impacted his studies. What are the dimensions of the table, the net, and the ball itself? The size of the table is 9 feet in length,
The table is 5 feet in width. The standard thickness of the table is 25 millimeters. The net is 4.5 millimeters in height, and the height of the net is 6 inches. पाकिस्तान के किन शहरों से ज्यादा लोग खेलने के लिए शामिल होते हैं इस खेल में? जी, ये रुझान बढ़ता रहता है। स्टार्ट में सबसे पहले तो ये कराची से शुरू हुई 60s में और 70-80 तक कराची का होल्ड रहा। उसके बाद फिर ये लाहौर की तरफ शिफ्ट हुई और 90s में लाहौर तक रही। 2000 के बाद फिर केपीके ने इसमें जो पहले ये एनडब्ल्यूएफपी कहलाता था और उसका एक इलाका सवात, वहाँ भी एक दो लोग खेलने वाले थे। वहाँ से प्लेयर्स बहुत अच्छे निकले। अभी जो हमारा करंट नेशनल चैंपियन है शाह खान, उसका ताल्लुक भी उधर से है, सवात से है, पाकिस्तान आर्मी से की तरफ से खेलता है। वो 2 दफा नेशनल चैंपियन बन चुका है। Where do people come from in Pakistan to represent? The awareness keeps on growing. It started in the 60s where it was popular in Karachi. In the 80s, the game progressed into the 80s and 90s in Lahore. By the millennium, the games moved on to other areas like KPK, Peshawar, where the current champion is based in Swat, Shah Khan. He has been the world champion twice representing the Pakistan Army. हमारे इधर पंजाब की बात करें तो पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी से काफी सारे प्लेयर्स निकले हैं। फैसलाबाद में गेम होती है, भावलपुर में गेम होती है, भावनगर में गेम होती है। तो इस तरह से जो है ना ये ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में टेबल टेनिस होती है। सिंध में कुछ कम है, लेकिन उसके अलावा जो है ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत एफर्ट कर रहे हैं और इस गेम के लिए जो है ना काफी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी। If we talk about here in Punjab, in Lahore and Rawalpindi, there are quite a lot of competitors. Faisalabad, Bahawalpur and Bahawalnagar. Year on year it varies, but there are table tennis clubs everywhere in Pakistan. But Sindh is the only one that's less represented, but the federation is looking to improve those numbers. लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अगर एक प्लेयर खेलने आता है, उसके आपको पता है पाकिस्तान के जो पीपल हैं वो इतने रिच नहीं है। इसके जो इक्विपमेंट है वो सारा इम्पोर्टेड है, लोकल हम इसे पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता। तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना वो काफी सारी गेम को इम्प्रूव करने में या प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा दुश्वारियां हैं। The biggest challenges are the equipment is all imported. Nobody manufactures the equipment in Pakistan, therefore it can prove to be expensive. बाकी अपने टेबल के उसका पैडल का जो है वो रैकेट का साइज पूछा, तो उसका साइज जो ITTF की बुक में लिखा हुआ है वो कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, लेकिन उसकी जो है रिक्वायरमेंट ये है कि जो उस बैट की 75% वुड होनी चाहिए। मतलब आप उसे मेटल का यूज नहीं कर सकते, प्लास्टिक का नहीं यूज कर सकते, उसकी कुछ लेयर डाल सकते हैं। 75% उसकी वुड होनी चाहिए वुड की, और उसकी दोनों तरफ रबर्स लगते हैं और रबर्स में भी डिफरेंट क्वालिटीज हैं। एक होता है रबर, उसके साथ जो है ना उसको कहते हैं पिंपल रबर, उसके ऊपर की तरफ दाने निकले हुए होते हैं जिससे जो है ना आप स्पिन ज्यादा कर सकते हैं, वो डिफेंसिव रबर कहलाती है। और एक प्लेन रबर होती है, उसके नीचे स्पॉन्ज लगा होता है, उसे अटैकिंग डिफेंसिव रबर कहते हैं। The biggest challenges are the equipment is all imported. Nobody manufactures the equipment in Pakistan, therefore it can prove to be expensive. The material of the bats used in the tournament play are usually made from pimple rubber. There is no standard size of the bat according to the manual. There are small holes, indentations in the bat. The requirements is that it must be made of 75% wood.
You cannot use metal or plastic material, but you can add different layers to make up the quantities and the proportions of the materials which comprise to make the bat. On both sides is the rubber, and there are different types of rubber with their own quality, but the rubber which is used for producing the bat is called pimple rubber. There's another type of rubber which is used to generate spin on the ball, and there is another type which is plain rubber, which is used for playing attacking or defensive shots. इधर टेबल टेनिस के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए थे या क्या क्वालिफाई करना पड़ता है खेलने के लिए इंटरनेशनल के लिए? डोमेस्टिक के लिए डिफरेंट और इंटरनेशनल की डिफरेंट, क्या डिफरेंट होता है डोमेस्टिक से जाने से इंटरनेशनल में? टेबल टेनिस एक इंडिविजुअल गेम है। इसमें आपको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस देनी होती है, इंडिविजुअल मैचेस आपने जीतने होते हैं। तो इसका हम एक रैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ है हमने पाकिस्तान में। जैसे लास्ट टाइम नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, अभी जो कमिंग वीक है उसमें हम 500 तक करवा रहे हैं। तो जो ऑल ओवर द ईयर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उस प्लेस की हम रैंकिंग बनाते हैं और उस रैंकिंग की वजह से जो है ना प्लेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा उसमें चैलेंज हो और या हमें पता हो कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है तो हर इवेंट से पहले हम उसके ट्रायल्स करवाते हैं ताकि एक फेयर और जो है ना कॉम्पिटेंट टीम बन सके। आपके अलावा भी कोई खेलता है आपके खानदान में, इस फैमिली में? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं खेला और क्योंकि मैं अकेला ही था इस स्पोर्ट्स में। बाकी जो है वो बड़े भाई थे, वो बैंक में थे, दूसरे अपना बिजनेस करते हैं। तो टेबल टेनिस में अकेला ही खेलता हूँ। इसका मटेरियल कौन सा है जो बैट जिससे बनता है? इसकी वुड इस्तेमाल होती है। इसमें 2-3 तरह की वुड होती है। एक बाल्सा कार्बन है और ये जो रैकेट बैट है ये 2-3 कंट्रीज ही बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टॉप पे तो चाइना है, फिर अब जर्मनी भी आ गया उस फ्लोर में, इंडिया भी इस फ्लोर में कुछ है, कोरिया भी है। तो लेकिन जो ज्यादा ब्रांड है अच्छे वो चाइना की है। और ये सारा जो मतलब लोकली नहीं है, ये सारे इम्पोर्टेड मतलब है, बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसका टेक्सचर क्या है? जी, ये हाथ से आप इसे जज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी रबर को जज करना है तो आप उसे उस थोड़े फासले से, लाइक अगर आप 30 सेंटीमीटर से एक बॉल को ड्रॉप करें उसके ऊपर और उसका रिटर्न जो है 23 से 25 सेंटीमीटर अबव आए तो ये उसके बाउंस से पता चलता है कि इस रैकेट की स्पीड और स्पिन कितनी है।
What skills are applicable to the game of table tennis, and how does a person qualify to play internationally? What's the criteria? What's the difference between international and domestic representation? Table tennis is an individual game. You play through the matches and win. Of all the tournaments across the country taking place, we make a ranking system comprised from all the players participating in those tournaments. If there's more competition for places than usual, then we hold trials for those players who are fighting to attain a ranking position and to ensure that competition is fair and square. You have a table tennis background as part of your family or any relatives in table tennis? No, I am the only one in my family who chose to play table tennis. My older brother works in a bank and the others are busy in running their own businesses. What is the material used for the rackets? Wood is used for producing the bats. There are 2 or 3 other types of wood used. One is called balsa carbon. Top of the list from those who produce the bats is China. Germany or India are amongst the manufacturers, and Korea. But the best quality bats are manufactured in China. All the bats used are imported. What's the texture of these rackets? You cannot judge from the texture with your hand. You can tell by the bounce and from the distance of the ball travels. If you want to decide whether the rubber is official, if the return travels further than 23 to 25 centimeters, you can tell by the bounce whether the ball spins and the speed of your racket head. अगर मैं खेल रहा हूँ ये टेबल टेनिस किसी के खिलाफ, मैंने ड्रॉप कर दिया बॉल जमीन पे, मेरा पॉइंट पे लूज हो जाता है या वो दोबारा खेला जाता है पॉइंट? ये बड़ा अच्छा आपने पूछा कि अगर आप सर्विस करवाने लगे हैं तो इसका रूल ये है कि सर्विस करवाते वक्त बॉल आपकी स्ट्रेट पाम के ऊपर आपकी बॉल होनी चाहिए और ओपोनेंट को विजिबल हो, और आपने बॉल को अपनी पाम से 6 इंच टॉस करना है। अगर आप 6 इंच उसको फ्लाइट नहीं देते हैं तो फाउल है। जैसे ही आप पाम से बॉल को टॉस करते हैं, गेम स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने बॉल को पाम से टॉस किया और बॉल आपके रैकेट पे नहीं लगी और जमीन पर गिर गई सीधा, तो अपोनेंट का पॉइंट हो जाएगा। मेरे नेफ्यूज कजन भी कहते हैं कि अगर बॉल नेट को लगता है वो पे पॉइंट, इसके भी बताया था अगर नेट को, क्योंकि टेनिस में अगर लेट होता है दूसरी साइड पे जाता है वो पे लेट हो जाता है। इसमें क्या है टेबल टेनिस में, अगर नेट को लग के जाता है बॉल क्या होता है फिर? उसमें ये है कि अगर आप सर्विस करवाते हैं, सर्विस के दौरान अगर आप बॉल नेट को लग के राइट कोर्ट उसमें टेबल पे लगे, मतलब ने सर्विस करवाई, नेट को छूने के बाद वो दूसरे के कोर्ट में गिर गई तो वो अगेन होगी, लेट होगी। लेकिन अगर नेट को लग के बाहर चली गई, टेबल को टच नहीं किया, तो अपोनेंट का पॉइंट है। लेकिन ड्यूरिंग द रैली अगर वो बॉल सर्विस ठीक होगी, सर्विस के बाद रैली के दौरान अगर बॉल नेट को छू जाती है तो वो कंटिन्यू रहेगी और उसमें लेट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल रैली चल रही 20 या 30 की और वो नेट को लग के दूसरी साइड पे जा रही, वो दूसरे बंदे का पॉइंट नहीं आएगा, वो पर पॉइंट चली जाएगा, रैली होती रहेगी। जी जी, रैली कंटिन्यू रहेगी। टेबल टेनिस के कवानीन जो है वो कैसे बनाते हैं? जी, टेबल टेनिस के कवानीन तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन बनाती है। इसकी एक उन्होंने ITTF की वेबसाइट है, उस पे टेबल टेनिस के कवानीन दिए हुए हैं और इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं। लेकिन ये ITTF की जनरल बॉडी मीटिंग होती है और इसका एक बोर्ड है ITTF का जो कवानीन से मुतालिक तमाम फैसले करते हैं। तो ITTF इसके कवानीन बनाता है टेबल टेनिस फेडरेशन गेम के। आप क्या एडवाइस देंगे अगर नया बंदा या लड़की लड़का जो भी खेलना चाहते हैं टेबल टेनिस, आप उनको क्या एडवाइस देंगे?
उसमें एडवाइस ये दूंगा कि टेबल टेनिस में रिफ्लेक्सेस की, क्योंकि टेबल टेनिस गेम है, आपको पता है अभी लेटेस्ट बहुत सारी रिसर्च हो रही है इसके बारे में। इसमें जो है ना एनर्जी सिस्टम है 3 तरह के, हर गेम में वो इस्तेमाल होते हैं। तो टेबल टेनिस एक फास्ट गेम है, तो इसमें वो जो एनर्जी सिस्टम 3 तरह के होते हैं, तो उसमें जो फास्ट ट्रेनिंग वाला मेथड है ना वो यूज होता है। उसका मतलब ये है कि ये कम दौरानिए की गेम, लेकिन उसमें स्पीड बहुत ज्यादा काउंट करती है। लेट्स से कि जैसे स्प्रिंटर है, वो थोड़े फासले की स्प्रिंट होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और एक होता है जैसे मैराथन है, मैराथन में वो उसका फासला ज्यादा होता है लेकिन उसकी स्पीड कम होती है, तो उसके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं लेकिन उसके लॉन्ग टर्म चलते हैं। लेकिन टेबल टेनिस के लिए हमें फास्ट रिफ्लेक्सेस चाहिए, और उसके लिए जो है ना उसी एनर्जी सिस्टम के मुताबिक उसकी ट्रेनिंग करें। In the context of a game, if I'm serving, the ball falls to the ground rather than on the table. What happens? When serving, the ball must be visible in your palm to your opponent. You must toss the ball in the air at least 6 inches to be considered a fair serve. If the ball is not tossed up as high as 6 inches, it's considered a foul. When you toss the ball with your palm, it constitutes a rally. If the ball goes out of play, then your opponent will be awarded point without the ball bouncing on the other side of the table. But if this occurs during the course of a rally, the rally will continue as normal. How are the rules compiled for table tennis? Through the federation or by an external third-party organisation? The International Table Tennis Federation makes the rules. Usually they have appointed a board that works with the ITTF in the International Table Tennis Federation to compile the laws. What advice would you give to someone who is new to table tennis? The advice I would give is for table tennis, you need fast reflexes. There is some research going on about this game, and they have found that there is an element of reactions timings required. The research has suggested that all 3 types of energy systems are used during a game of table tennis. Let's say a sprinter has to run a shorter distance, but he has to run faster to maintain the speed at the shorter distance. But a marathon runner, on the other hand, will have to run a longer distance, so they don't have to run at a particular pace. But in a shorter distance, your reflexes would be used to the optimum levels. टेबल टेनिस में आंख और हाथों का कितना किरदार होता है? इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके बगैर आप खेल नहीं सकते। और नैनो सेकंड में बॉल ट्रेवल कर रही होती है, उसकी ट्रेजेक्टरी को आपको रीड करने के लिए जो आपके रिफ्लेक्सेस यूज होते हैं, तो उस वक्त तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप सोच के खेलें कि बॉल इस तरफ आएगी तो मैं ऐसे करूंगा। ये तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो प्रैक्टिस करते हैं हर पॉइंट की, हर टेक्निक की, उसके बाद जो है ना आपकी वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन जाते हैं। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन मेन चीज है टेबल टेनिस में। अगर वो आपका ठीक नहीं है तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। और आगे जाके आप क्या सोच रहे हैं ये टेबल टेनिस को कैसा इम्प्रूव और कैसे और ग्रो और बड़ी हो सकती है, सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन पूरी दुनिया में? जी, उसके लिए तो रिक्वायरमेंट ये है, जैसे जो हमने काम शुरू किया, ITTF ने भी शुरू किया कि इसको लोगों को अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड टेबल टेनिस डे है जो 23 अप्रैल को मुनक्किद किया जाता है, तो एक तो वो सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा ये कि इसके लिए
लोगों को एक्सेस हो टेबल की। तो जब तक आपके पास, क्योंकि फुटबॉल क्रिकेट लोग तो स्टेट में भी खेल लेते हैं, लेकिन टेबल टेनिस के लिए टेबल रिक्वायर है। उसके लिए जो है ना, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे सोर्सेस फराहम करे कि टेबल तक भी लोगों के एक्सेस हो। जैसे हमने पार्क्स में, स्टेट्स में टेबल्स, जो आउटडोर टेबल्स लगाई हैं, उससे कुछ प्लेयर भी आते हैं, फिर वो क्लब की तरफ जाते हैं। इस तरह के जो इक्विपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि जो पाकिस्तान में और दूसरे कुछ जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग जो है, वो भी जो टेबल टेनिस का इक्विपमेंट है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो टेबल टेनिस इक्विपमेंट थोड़ा सा महंगा है, उस वजह से जो है ना इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। How much of a role does hand-eye coordination play in table tennis for being a fast-paced game? In this game, hand-eye coordination is very important. The ball travels through the air so quickly, but your hand-eye coordination usually determines how good you can be at table tennis. Without good hand-eye coordination, you cannot be a consistently good player. You cannot determine the results without using your hand-eye coordination, as you have less time to decide which way the ball is going to go. आपके अब अगले क्या टूर्नामेंट्स आ रहे हैं इसके टेबल टेनिस के? और आपने कहा था कि आपकी एक अंडर 15 भी है लड़की जो जिनको क्वालिफाई जो सिलेक्ट किया गया है। अभी जो हमारी दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक जूनियर नेशनल होती है और एक सीनियर नेशनल होती है। जूनियर नेशनल में ये एज बाउंडिंग होती है, लाइक अंडर 15 और अंडर 19 इवेंट्स। और जो नेशनल चैंपियनशिप होती है वो ओपन कैटेगरी की होती है, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। तो हूर फवाद एक हमारी कराची से एक लड़की है, और इंटरनेशनल भी अभी उसने WTT इवेंट हुआ था कतर में, उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और ओपन जो नेशनल चैंपियनशिप है वो भी उसने विन किया, और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप उसने विन किया। What are your plans for growing the game? We celebrate World Table Tennis Day on the 23rd of April this year, and the other thing is we would like to see more access to tables for players. Football and cricket you can play in the grounds, but for table tennis you need a table as an essential requirement. The government is supposed to be supporting this initiative to providing the sources for this to be possible, to donate funds for more tables to be laid out on the grounds of the national parks all over the country. We have set up tables in grounds and parks. People use those tables and they go into competition. All the equipment is imported. What are your future events coming up? There's a junior national and an open national championship. Junior national championships are for 15 to 19-year-olds, and the open championship is in the open category, open to all players. There is no age limit. Hur Fawad is one of our junior national players from Karachi. She has won a bronze medal in Qatar and participated in the Open Championship, and she has won the national junior championships as well. हर गेम के बाद 2 मिनट्स का ब्रेक होती है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द गेम आपको ब्रेक की जरूरत हो तो कोच टाइम आउट ले सकता है, और उस टाइम आउट का पीरियड जो है वो 2 मिनट्स होता है। उसके बाद जो है जी टेबल टेनिस 10 पॉइंट्स की गेम है। जो प्लेयर फर्स्ट 11 पॉइंट कर लेता है वो जीत जाता है, और अगर दोनों प्लेयर्स के पॉइंट 10 ईच हो जाए तो ये गेम चलती रहती है जब तक कि एक प्लेयर 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ना ले ले, तो ये गेम चल जाती है। और लेकिन इसमें सर्विस का रूल ये है
सर्विस करवाते वक्त आपने पहला टिप अपनी टेबल पे देना है और दूसरा टिप अपोनेंट की टेबल पे जाएगा। उसके बाद उसकी एबिलिटी है कि वो रिटर्न जो बॉल है वो अपोनेंट की टेबल पर फेंकेगा। सर्विस के दौरान ये है कि अगर बॉल सर्विस करवाते वक्त नेट को छोड़ जाए और उसके राइट कोर्ट में गिरे तो वो लेट हो जाती है, सर्विस अगेन होगी। अगर वो नेट को छूने के बाद बाहर चली जाती है तो अपोनेंट का पॉइंट हो जाता है। ये सबसे ज्यादा तो आजकल आपको मालूम है कि फेसबुक बहुत ज्यादा लोगों के इस्तेमाल में है। हमारा पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के नाम से एक पेज है और एक पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन के नाम से एक पेज है फेसबुक पर, और उसके बाद हमारी वेबसाइट है पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन PTTF के नाम से। तो उसमें भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, जो हमारे ऑफिस बेरर्स मेन ऑफिस बेरर्स हैं उनके थ्रू भी कांटेक्ट किया जा सकता है। और इसी तरह हमारा एक पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन का मेन और वुमेन का सेपरेट एक ग्रुप है प्लेयर्स का, जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू कोई भी हमें कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन आपको कैसे लगता है कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है? क्योंकि आपको लगता है कि चाइना और अक्सर जापान, कोरियन ये अक्सर होते हैं फेवरेट्स और हमेशा होते हैं। उस लेवल पहुंचने के लिए आपको कितनी अभी और जरूरत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? उसके लिए तो मेन हमें उनके जो सेटअप है और जो उन्होंने अपने एक सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लाइक जो वो अपने टेबल टेनिस स्टार्ट करते हैं वो 3 या 4 इयर्स बॉयज या गर्ल्स को टेबल टेनिस स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर वो उस एज से काम करना शुरू करते हैं जूनियर लेवल पे। फिर अंडर 12 फोर्ब्स के इवेंट होते हैं, उस पे वो कंसंट्रेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, तो उनके ऊपर जितना काम करेंगे तो उतनी जल्दी जो हम उसको पकड़ सकते हैं। वरना पहले हमारे सिस्टम ये था कि जो हमारे कोई भी स्पोर्ट है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए वो 10 इयर्स अबव मतलब स्पोर्ट को स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनली। तो इसकी एज जो है ना प्रॉपर एज में स्टार्ट करना है टेबल टेनिस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के मैंने बताया फेसबुक पेज है पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के नाम से, पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन के नाम से, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन PTTF, उस पे हमारे जो मेन ऑफिस बेरर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल्स, फोन नंबर्स मिले तो कोई भी हमें आप अप्रोच कर सकते हैं। Reminder of the rules of table tennis. After each game, there is a 2-minute break. During the course of any game, if you need a break yourself as a player, then you need to tell the coach and they will request a timeout. You could have a 2-minute timeout. With regards to the rules, each game is played up to 11 points. Should the game be tied after 10 points, there will be a tie break and you will have to win by 2 clear points. With regards to the serving rule, you will need to tap the ball on your side of the table and it's the opponent's responsibility to return the serve, but if they fail to return the serve, you will win the point. On your own serve, if the ball touches the net without travelling over the net, the point will be played again. If the ball touches the net during a rally, the rally continues until the point is won. How much more work is required to reach the standards of the likes of Japan and China and the top nations participating in table tennis? For this, we will need to adopt the same system as those countries that are successful. They start at the age of 3 to 4 years. They start from the junior level. They have a system for under 12 events. They focus on early development as they work their way up the system structure. It's important to start your children at the right age. We will have to get the children involved
The age you need to get your children interested in the game is from above the age of 10. We have a Facebook page, Pakistan Table Tennis Federation and Punjab Table Tennis Federation. The website and our bailers' contact details are listed on the website, or if you search Pakistan Table Tennis Federation, you can find us.